Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our next topic is three types of beam connection. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that stress diagram for a singly RC beam. In our third chapter, singly RC beam, our first topic is stress diagram for singly RC beam. In this topic we saw equation of neutral axis. How we can find neutral axis? So equation become xu is equal to 0.87 fy est upon 0.36 fck into b. Now then after we saw moment of resistance mu. How we can find mu? So there is equation given for mu is equal to 0.87 fy ast into d in bracket 1 minus fy into ast divided by fck b into d. Now mu with respect to concrete, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सो mu लिमिट इज इक्वल टू 0.36 xu max divided by d in bracket 1 minus 0.42 xu max upon d bracket over fck b into d square. Now then after we saw what is neutral axis. So the axis which separate compression zone and tension zone in the cross section of beam is known as neutral axis. Now for a simply supported beam, the cross section above Na is in compression and while the cross section below neutral axis is in tension. Now then after we saw maximum depth of the neutral axis xu max. So the failure of beam may be due to the failure of concrete or failure of steel. Failure due to concrete is called ब्राइटर फेलियर while the failure due to steel is called डक्टाइल फेलियर. ठीक है, जो कंक्रीट की वजह से स्ट्रक्चर में फेलियर होगा तो इट इज़ कॉल्ड ब्राइटल फेलियर एंड देन आफ्टर स्टील की वजह से स्ट्रक्चरल मेंबर फेल होगा तो इट इज़ डक्टाइल फेलियर. Now when amount of steel in a beam is a more than the required balance condition, the neutral axis move towards bottom for balancing. ठीक है, कि बीम के अंदर जो रिक्वायर्ड स्टील है उससे ज़्यादा स्टील की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. एट दैट टाइम न्यूट्रल एक्सिस मूव करेगी बॉटम में फॉर बैलेंसिंग. देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन अ स्टील रीचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू. टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ तक पहुँचेगी? इट्स अल्टीमेट वैल्यू बिफोर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस reach in concrete and steel will fail by yielding. Thus the brighter failure of concrete can be avoided. So there is some values of different grade of concrete. So for fy is equal to 250, xu max is equal to 0.53 d and 415 xu max is equal to 0.48 d and 500 it is 0.46 d. Now three types of beam section. So there are three types of beam section. First is balance section, under reinforced section, over reinforced section. Three types of beam section. ठीक है, our next topic is three types of beam section. The first is balance section, second under reinforced section and over reinforced section. The first is a balance section. So compressive strain in a concrete and tensile strain in a steel reach their limiting value simultaneously. ठीक है, अब हमारे पास आप फिगर में देख सकते हो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है. बीम का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. सो इन दिस सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेन इन अ कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी एंड टेंसाइल स्ट्रेन इन अ स्टील रीच देयर लिमिटिंग वैल्यू, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वहाँ तक पहुँच जाएगी. दोनों साथ में, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेन, वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच जाएगी दोनों साथ में. एट द टाइम क्या होगा? एट द कोलैप्स कंडीशन स्ट्रेन इन कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.0035 लिमिटिंग स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट. ठीक है, एट दैट कोलैप्स कंडीशन क्या है? स्ट्रेन इन कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.0035 लिमिटिंग स्ट्रेन इन अ कॉन्क्रीट. ठीक है, तो आप लोगों को फिगर में दिया गया है वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. सो उसका दिया गया है बैलेंस सेक्शन क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या है और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेक्शन है तो ई एस इक्वल टू ई एस यू, देन
under reinforced ES greater than ESU and ES less than ESU for over reinforced section, where ESU is equal to 0.87 Fy upon ES plus 0.002. So it is the different type of stress diagram for a balanced section, under reinforced section and over reinforced section. ठीक है, where ESU epsilon SU equal to 0.87 Fy upon ES plus 0.002, it is limiting strain in a steel. Now for a balanced section, ES equal to ESU, epsilon S equal to epsilon S into U. Then epsilon S is equal to strain in a steel. Epsilon S is equal to strain in a steel. Then AST equal to AST balance. Both the material will fail at the same time. ठीक है, कंक्रीट एंड स्टील दोनों सेम फेल होगा. Now for a balanced section, XU is equal to XU max, PT equal to PT limit and MU equal to MU limit. MU can be calculated with respect to steel or a concrete. MU limit is equal to 0.36 multiplied by XU max divided by D in bracket 1 minus 0.42 XU max divided by D FCK BD square. This value is given in IS 456 2000 पेज नंबर 96. ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को दी गई है, फॉर्मूला इन IS 456 2000. नाउ मोड ऑफ फ्लेक्सर फेलियर आप लोग फिगर में देख सकते हो. अंडर इन्फिक्स कंडीशन, देन बैलेंस कंडीशन, ओवर एनफोर्स कंडीशन. epsilon S is called limiting strain in concrete. Epsilon SU is equal to limiting strain in steel and ES equal to strain in steel. Now under reinforced section. So tensile strain in a steel reaches limiting value. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन किस में, टेंसाइल स्ट्रेन किस में आएगा, स्टील के अंदर. तो वो कहाँ तक पहुँचेगी, रिचेस लिमिटिंग वैल्यू. क्या है लिमिटिंग वैल्यू, 0.87 Fy अपन ES plus 0.02. Earlier to compressive strain in a concrete reaching the limiting values of 0.0035. Now for under reinforced section, epsilon S equal greater than epsilon SU. Epsilon S is equal to limiting strain in concrete and epsilon SU equal to limiting strain in steel. Steel area of steel less than area of steel balance. So steel will be filled before concrete. XU less than XU max and PT less than PT limit and MU less than MU limit. It is for under reinforced section. ये वैल्यू किसके लिए है, अंडर reinforced section. Now MU is equal to 0.87 Fy area of steel D in bracket 1 minus Fy into AST divided by FCK B into D. This formula is also given in IS 456 2000 page number 96. Now next is over reinforced section. RC section, reinforced concrete section, in which the limiting strain in concrete, it is 0.0035 is a reach earlier than the yield strain of the steel, are called over reinforced section. ठीक है, जो रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन होगा तो उस सेक्शन में क्या होगा, जो लिमिटिंग स्ट्रेन वैल्यू है कंक्रीट की वो कितनी है, 0.0035. कहाँ पहुँचेगी, अर्लियर इल स्ट्रेन ऑफ द स्टील, स्टील की जो इल स्ट्रेन है वहाँ तक पहुँचेगी. तो इट इज़ कॉल्ड ओवर रेनफोर्स सेक्शन. ठीक है, ज़्यादा स्टील प्रोवाइड की गई होगी बीम के अंदर, सो इट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन. Now for over reinforced section, ES less than ESU, epsilon S less than epsilon SU. At a failure steel, it is not at yielded and concrete burst out. At a failure steel is not at yield and concrete burst out. As there are no warning of failure such section, IS को recommend avoiding such design. ठीक है, at that time क्या होगा, over reinforced section में
कि sometimes failure may occur and there is a no warning about failure. ठीक है, सो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसे अवॉइड किया है. सो एक्स यू इज इक्वल ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स ने एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिट. तो एम यू कैन बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्क्रीट. तो एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई डी इन ब्रैकेट 1 minus 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर. इट इज़ ऑल्सो गिवन IS 456 2000 page 96. Now next is maximum percentage of tension reinforcement, very most important topic. So maximum percentage of tensile reinforcement PT limit for a singly reinforced rectangular section is given in SP 16 page number 10 table number E. So here table is there. There is FC value of FCK, then Fy for 250, 415 and 500. So for FCK 15, the value of Fy for a 250 is 132, 415.72 and 500.57. Then after FCK, value of FCK is 20. At that time Fy is equal to for 250 it is 176, 415, 196 and 500.76. Then after FCK is 25, the value of Fy for 250 is 2.20, 415, 1.19 and 500.94. Same way FCK is equal to 30, Fy for 250 is 2.64, for 415 it is 143 and for 500 it is 1.13. Now percentage of steel tension reinforcement limit may be calculated using following formula. So for Fe250 PT limit is equal to 21.97 FCK by Fy. For Fe415 PT limit 19.82 FCK by Fy. For Fe500 PT limit 18.87 FCK by Fy. So ये याद रखो. Now types of problem. So normally there may be types of problem: analysis of section and design of section. How we analyze the section and how we design of section. So there are normally maybe two types of problem: analysis of section and design of section. So first is analysis of section. So in this type of problem, cross section and reinforcement detail are given. Moment of resistance is to be calculated. In this section analysis में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन है एंड रेनफोर्समेंट डिटेल है, वो आप लोगों को दी जाएगी. एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे. ठीक है, सो इट इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम एनालिसिस ऑफ सेक्शन. एंड देन डिज़ाइन ऑफ सेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम फैक्टर डिज़ाइन लोड एंड MU आर गिवन. ठीक है, फैक्टर डिज़ाइन लोड आप लोगों को दिया जाएगा, MU भी दिया जाएगा. एंड देन आफ्टर बीम क्रॉस सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट आर टू बी कैलकुलेटेड. बीम का जो क्रॉस सेक्शन है एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ सेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द section. So in this way you can solve some problem related to analysis of section and design of section. So three types of beam section: balance section, under reinforced section, over reinforced section. So in a balance section, compressive strain in a concrete and tensile strain in a steel reach their limiting values simultaneously. At the collapse condition, epsilon c equal to 0.00535, it is the limiting strain in the concrete. So in this section, epsilon SU is equal to 0.87 Fy upon ES plus 0.02 is equal to limiting strain in a steel. Now for a balanced section, XU is equal to XU max, PT equal to PT limit and MU equal to MU limit. Now under reinforced section, so tensile strain in a steel reaches limiting strain 0.87 Fy upon ES plus 0.002, earlier to compressive strain in concrete reaching the values of 0.0035. So for under reinforced section, ES greater than ESU. In this section, XU less than XU max,
PT less than PT limit, MU less than MU limit. So how you can find MU? So it is MU is equal to 0.87 Fy AST D in bracket 1 minus Fy into AST upon FCK B into D. Now then after over reinforced section, RC section in which the limiting strain in a concrete is 0.00358 is earlier than the yield strain of steel or coal over reinforced section. So at a failure, steel is not at yielded and concrete burst out. As there is no warning of failure such section, IS code recommends avoiding such design. So in this section, XU greater than XU max, MU greater than MU limit, and MU can be calculated with respect to concrete. Now there is some table for maximum percentage of steel reinforcement. It is for FCK value of FCK and different type of value for FY for 250, 415 and 500. Now types of problem, the like analysis of section, design of section. In first analysis of section, cross section and reinforcement detail are given and moment of resistance is to be calculated, and design of section, factor design load and MU are given, and beam cross section and amount of reinforcement are to be calculated. So it is types of beam section.